Assalamu alaikum and welcome back to the GRC show. We are very happy and थोड़े से tired भी as well because we have been celebrating 2 दिन से. The last time we sat down to talk with Mr. Hassan Hussain Qureshi, हमने ताज़ा 3 साल बाद टेस्ट मैच होम ग्राउंड पे जीता था, which came after a whitewash against Bangladesh series and a very record-breaking loss against England. लेकिन we won the series, so just उम्मीद है कि अब आप खुश होंगे. पहले तो ये बोल दूं. जैसे आपने कहा tired from 2 days of celebrating what I think yesterday or today would have been the fifth day of the match. So the fact that we managed to win in 3 days and the fact कि वो एक ऐसी win थी जिसके ऊपर बहुत सारे सवालात मैच से पहले और मैच के दौरान उठाए जा रहे थे. To in the end win it so comfortably. I think जब शान ने वो सिक्स मारा ना और जब उन्हें आते ही पहली 4 बॉलों पे चौके मारे तो that was all of us. That was just all of us. हमारी भड़ास, हमारा गुस्सा, हमारी फ्रस्ट्रेशन जो थी ना वो हर चौके के साथ निकल रही थी. और जब वो आप 6 मार के आप सीरीज जीतते हो, अभी भी थोड़ा सा रिया जी अनरील लग रहा है, अभी भी डर लग रहा है कि मे बी इट वाज अ ड्रीम. It's incredible, and like you said, after that record-breaking loss, when we spoke to, we thought that might just be the darkest time. But I think Nasir Hussain said it best: Pakistan cricket, 1 minute down, one minute up. आई थिंक हमारा वो जो पीसीबी का एक स्लोगन है ना, वी हैव वी विल, उसको हटा के हमें 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप कर देना चाहिए. Exact 100%, because I don't think we have, and I don't think we will. I think it just happens, and when it does, we should absolutely be like the 1 minute up, 1 minute down. That's who we are. So I was going to mention कि मेरा favorite moment क्या था, and I want your thoughts on this as well. So after Harry Brook hit his triple century पहले टेस्ट में, आपको याद है कि उसने पोस्ट मैच प्रेसर में बोला था कि I want to hold this pitch up and take it home. और उसके बाद he could not score well in the next 4 innings. I want In your thoughts his on. in his defense, I don't think it was that pitch that he ever played. I mean, technically, he played on that pitch again in Multan. I think it's just good that we finally, considering उस वक्त तक जैसे आपने point किया, that triple hundred was his fourth consecutive hundred against Pakistan in Pakistan. Yes. हमने स्टैट्स लगाना शुरू कर दिए कि पूरे पाकिस्तानी बैट्समैन थे जिनका करियर पाकिस्तान में इतने हंड्रेड्स उन्होंने नहीं किए. तो एक तो बिल्कुल वो था that we finally figured out a way to start just not letting him hit us for hundreds. We figured out the fact that it was a challenge by spin. मेरे लिए जो एक और इंटरेस्टिंग मोमेंट उसी वेन में अगर हम बात करें कि जब बेन डकेट से आके स्काई न्यूज ने पूछा तो उसने कहा कि Pakistan are under pressure because they're 1-0 down. We know they can crumble, and we beat them 3-0 last time, so we're very confident. And at that time, he scored an incredible 100. और उसके बाद से I mean, he got a good 50 in this last match. So I think maybe at some level, और ये मैंने बड़े England fans से भी सुना कि उनको लगा कि England थोड़े से जो है over confident हो गए थे, and maybe they did not take Pakistan as seriously as they should have. So maybe the moment you're talking about also, maybe it all just added up to a little bit of I would say mentally England being relaxed and Pakistan maybe mentally picking themselves up. Very important. So but yeah, all of these little moments, I think we look back to हम वो wickets देखें, आप वो catches देखें, आप वो stumpings देखें, it did look like Pakistan were in the ascendancy continuously, even with हमारे कंटिन्यूअस बैटिंग collapses and बैटिंग stresses. हम मुल्तान में भी सेकंड इनिंग्स में हमने सलमान ना रन बनाते तो वी वर इन अ बैड प्लेस, एंड इस टेस्ट मैच में भी अगर साउथ ना आते वी वर इन अ बैड प्लेस. तो कंसिडरिंग दैट वी ओनली प्लेड टू बॉलर्स, आई मीन आमिर और जाहिद तो पिंडी साइड सीइंग करने गए थे दोनों. सो इट वाज जस्ट के अगर आप वो मोमेंट्स देखें, it really in years to come we'll talk about this series कि आज जीत तो गए पर कैसे जीते, because there's so many things here that don't make sense. We'll get to other things later, but do you think this was Saud's best test innings ever? Absolutely, absolutely. आप I mean आप conditions देखें, आप situation देखें, आप बहुत सारे लोग थे जिनका criticism था कि उसको singles लेने दिए. Singles लेने पड़ते हैं, especially batting with lower order batsmen, keeping the strike going. Let's not forget कि उन्हीं difficult conditions में
आपने देखा था कि इंग्लैंड के भी दो स्पिनर्स आ रहे थे, तो आई फील के it's not just his best test innings. I think it's one of the most incredible test innings played by a Pakistani. The only other innings I can think of जो मुझे अपने lifetime में याद है is इंजमामुल हक against Bangladesh. That was a very difficult innings in Multan. You know, I can think back to maybe Fawad Alam against South Africa a couple of years ago. This was incredible batting, and Saud इस मैच में, इस सीरीज में हमने साउथ की बेस्ट नहीं देखी थी. This was a series winning knock, and this was a knock which showed why Pakistan have been so right to invest in him. And I really think it was, one of Pakistan's all-time great Test innings, irrespective home or away. Because आप उस innings का impact देखें, वो innings ना होती, आप ये match ना जीतते. We were looking to hardly even get a lead. We ended up with a lead, and he batted so well with the tail. And बड़ा, I would say, unlucky out हुए. It looked like he could have gone on and made even more runs. Saud's century was one of the major contributing factors. Obviously, what do you think were the other things? Of course, Sajid and Naman the. There was this strategy. There was this, that corner tigers wali, that hunger to attack. कि नहीं अब we are going to win this because series शुरू होने से पहले तो हमने सोचा भी नहीं था. But what do you think बिल्कुल were भी the contributing factors? So obviously देखें, जैसे आपने कहा साजिद and Noman, तो we can talk about them in detail. They were obviously huge contributing factors. I think Salman is batting with the tail in Multan was a big contributing factor. I think one thing that I saw a lot of people talking about, which does not maybe get mentioned enough, was how absolutely pristine Rizwan's keeping behind the stumps was. मुश्किल conditions में ball spin हो रहा है, dusty wickets हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी. He was immaculate. आप उनके catches देख लें, उनकी stumpings देख लें, जो बिल्कुल body के करीब catches थे. कोई हमने देखा जेमी स्मिथ who is a very talented player. हमने देखा उन पे बड़ी रिएक्शन आई कि उन्होंने एक कैच ड्रॉप किया, सलमान को ड्रॉप कर दिया, साउथ को ड्रॉप कर दिया. हमने देखा जो दूसरी सीरीज चल रही है न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में, बात हुई कि ऋषभ पंत हु इज वन ऑफ द बेस्ट कीपर बैट्समैन इन द वर्ल्ड, उन्होंने लेथम को ड्रॉप कर दिया, तो वहां सीरीज हार गए. रिजवान्स कीपिंग वाज इमैक्युलेट थ्रू आउट द सीरीज. एंड आई थिंक उससे आपके बॉलर्स की जो परफॉर्मेंस है, उससे उसको बड़ी एक आप कह लें एक पॉजिटिव एडिशन मिली. सेकेंडली ऑल्सो विच मे बी गेट्स ओवरलुक्ड इनफ, स्पेशली हमारे वो व्यूअर्स जो पश्तो बोलते हैं, दे अंडरस्टैंड कि जो टेक्निकल बातें, एक तो हमने वो सारा देखा है, दिस इज आकिब बॉल और वो पंगे ले रहे थे रिजवान, जो उनकी आदत है. बट बिहाइंड द सीन्स ही वाज गिविंग अ लॉट ऑफ इनक्रेडिबल एडवाइस, स्पेशली टू साजिद. उनको टेक्निकल एडवाइस, आप हैरी ब्रुक की विकेट अगर देखें तो उसपे उनको बार बार कह रहे हैं निकलने दो, उसको खेलने दो, इसको ये शॉट खेलने दो, लेट हिम गेट कंफर्टेबल. अब वो पश्तो में बोल रहे थे, लोगों को शायद जनरल व्यूअर्स को ना सब, और उसी को फिर स्ट्रेटर बॉल पे अगले ओवर में नुमान ने आउट किया. So he was on top of the game throughout, Rizwan. Saud's innings, Salman, I think, Sajid's batting, I think just coming in that innings and just smacking those runs and, getting hit on the chin. आपने वो कॉर्नर टाइगर्स की बात की, Yes. फाइट की बात की, getting hit on the chin, bleeding, but not giving up. I think these were all moments जो मे बी हमें दो मैचेस पहले भी नहीं नजर आ रही. एक फाइट थी, एक हंगर था, एंड आई थिंक जो भी आगे जाके होता है, this was a turning point. Like you said, 3 years since we won at home, a match or a series. You know, unexpected loss to Bangladesh. With all the greatest of respect to them, they had an incredible series. England, a team that had come here and won 3-0 last time. All of those factors, this series win and these performances, और आपके जो खिलाड़ियों पे, आपके कप्तान पे प्रेशर, बाबर की ड्रॉपिंग, शाहीन का ड्रॉप होना, all of those things, incredible. And we've seen the story change from Shan under pressure to Stokes under pressure. अब लोग कह रहे हैं कि जी स्टोक्स की कप्तानी नहीं होनी चाहिए, स्टोक्स को देखिए हाउ पलट गया. And what must Ollie Pope be thinking? He captained the team to a win, didn't make a run in that match, and then the captain comes back and अगले दो मैचेस में वो तो हारते ही हारते हैं. Ollie Pope barely got a run. So I think all of these things for me. Saud, Salman, Shan ki captaincy, obviously Sajid Numan, obviously, but also Rizwan's wicket keeper.
there was a lot of chatter about the pitch as well, जो कि अचानक चेंज हुई, रीयूज हुई, क्या कुछ हुआ पिंडी के मोटरवे को इन्होंने एक हफ्ते में क्या से क्या बना दिया, which people were जीटी like, रोड बना दिए. तो but also what we've heard after this series is कि this is not fruitful in a long run और ये पाकिस्तान ने सही नहीं किया. Pakistanis are saying this कि there's some criticism about it कि ये सही नहीं हुआ and this is not fruitful and this is selfish home advantage. What do you think about that? No, it's not selfish home advantage. I think I every mean, team home has. देखिए advantage मैं is selfish. exactly. And secondly, I was there. I saw in the press conference in Multan and on the ground, Brendan McCullum and Ben Stokes had no problem with the pitch, and they had no problem with the pitch in Pindi. आपके पास अच्छे स्पिनर्स हैं. You're up against a team जो टॉप क्लास स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल. देखिए उनके बॉलर्स उसी विकेट पे बॉलिंग करा रहे थे रिया जी. It's not like हमने उनको दूसरी विकेट. They were playing three spinners. We were playing three spinners. And let's not forget, Jack Leach has an excellent record in the subcontinent. An excellent record against Pakistan, and Pakistan तो historically लेफ्ट आर्म स्पिनर को देख के वैसे ही कोलैप्स कर जाती है. सो उसी विकेट पे हमने खेला, उसी पे उन्होंने खेला. दे हैड गाइज हु वर कमिंग ऑफ 300 एंड 262, क्या 400 मारे थे उन्होंने पहले. 800 में तो मैंने उसको इतनी बुरी तरह ब्लॉक कर दिया, मुझे तो कुछ नहीं याद उस मैच के बारे में. सो दे वर कमिंग इनटू इट, वी वर द वंस अंडर प्रेशर. क्यों? देखिए लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म आई कैन एग्री शॉर्ट, बट व्हाई नॉट लॉन्ग टर्म पाकिस्तान बी ए कंट्री दैट bowls spin well at home. जो कुछ व्यूअर्स शायद भूल जाते हैं या मे बी यंगर लोग भूल जाते हैं कि 80s में भी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट विक्ट्रीज अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज इन होम at home came via Abdul Qadir. You beat teams like England. You had success in India against India the first time. The only time Pakistan won a series was with Iqbal Qasim and Tauseef Ahmed. तो आपके पास स्पिनर्स तो है. स्पिनिंग अगर आपके पास इस वक्त 8 से 10 इनक्रेडिबल फास्ट बॉलर्स होते और आपके पास वो बैट्समैन होते हैं जो ग्रीन पिचेस पे अच्छा खेलते हैं, आप कहते हैं ये हमारा होम एडवांटेज और आप वो वाली पिचेस प्रिपेयर करते हैं. नहीं है आपके पास वो, तो क्यों ना आप अपनी स्ट्रेंथ पे जाओ. साजिद एंड नुमान की वी ऑल नो साजिद एंड नुमान दोनों मोस्ट प्रोबेबली साउथ अफ्रीका में नहीं स्टार्ट. We all know long term is not a doable thing to take, but we will take these players to Sri Lanka. We will take them to the UAE if we play Afghanistan. We will take them to Bangladesh. इंडिया का भी हमें खेल लिया तो वहां लेके, तो व्हाट्स द हार्म इन दैट. तो देखिए शॉर्ट टर्म फोकस था कि आप सीरीज जीत. अब लॉन्ग टर्म में अगर आप वापस इन विकेट्स पे आते हैं, आपको लगता है पेस बेहतर है, ठीक है. आपको लगता है स्पिन बेहतर है, ठीक है. आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट. मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिकॉज इंग्लैंड हैड नो प्रॉब्लम विद इट. हम इंग्लैंड जाएंगे, हमें सीमिंग विकेट्स मिलेंगी जहां पे उनके बॉलर्स को फायदा है. तो क्या लोग रोएंगे कि दिस इज अनफेयर होम एडवांटेज? आप इंडिया को देख लें, वो 12 साल पे जो होम पे सीरीज नहीं हारे थे न्यूजीलैंड से पहले, तो वो दे नॉट प्रिपेयरिंग विकेट्स लाइक दिस. You think Ashwin and Jadeja were taking wickets on seaming wickets? No, they were not. So, and उसके बावजूद India went and beat Australia twice in Australia. हम तो आज तक ऑस्ट्रेलिया में मैच नहीं जीते 95 के बाद. So it goes to show कि long term में भी it's not always harmful to have these wickets. So absolutely, I disagree with anybody who's saying about the home advantage. Like you said, home advantage is selfish. शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म को अभी मैं भूलने को तैयार हूं. अभी मैं सिर्फ सीरीज जीतने पे खुश हूं. लॉन्ग टर्म क्या होता है, ठीक है, अभी शॉर्ट टर्म देखें, अभी शॉर्ट टर्म पे फोकस करें. I think पाकिस्तानी हम innately इतने सैडिस्ट है कि हमसे ना हजम नहीं हो रही कि ये क्या हो गया है. तो we are हमें picking समझ नहीं आ things रही. to be sad for. एग्जैक्टली, बिकॉज वी वरी कि इफ वी गेट टू हैप्पी तो हमारे साथ और बुरा हो Okay, last question. What do you think are the foreseeable changes in Test cricket Pakistan in the future? जाएगा. सो आई वुड इमेजिन दैट लॉन्ग टर्म अगर आप देखें होम कंडीशंस में हमने देखा कि मे बी 3 स्पिनर्स खिलाने की आपको जरूरत नहीं. जाहिद का इम्पैक्ट बड़ा मिनिमल था. ही इज अ वेरी गुड बॉलर, बट आपको इम्पैक्ट, एंड स्पेशली हमने लास्ट भी टाइम भी बात की थी, जब आपके पास सलमान और सायन और कामरान और साउद है, 4 और स्पिन बॉलर्स, तो जाहिद को खिलाने से क्या फर्क पड़ता है. सो आई वुड इमेजिन दैट फॉर द टाइम बीइंग जाहिद वुड बी आउट, एंड वुड बी इंटरेस्टिंग कि डू यू रिप्लेस हिम विद अ बॉलर, because Amir is now being seen as an all-rounder who can bowl on these wickets? Or do you, I mean, the Pindi match was the first time in the history of Pakistan we opened the bowling with spin and did not use pace at all in the entire game. I mean, Pakistan does this is something maybe Sri Lanka used to do under Arjuna Ranatunga back in the day. ये तो हम उनको भी पीछे छोड़ गए.
So short term you have to ask yourself कि क्या जाहिद की जगह एक फास्ट बॉलर आते हैं, and there are still some questions. Obviously आप देखते हैं कि अगर अब्दुल्ला की फॉर्म वापस नहीं आती, do you take the risk of moving Shan up and bringing someone like Pereira or Babar back? डू यू शान की कप्तानी पे बात हो रही है, साउथ अफ्रीका जाके अगर अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता जो कि हिस्टोरिकली पाकिस्तान को नहीं मिलता, डू यू सी ए चेंज ऑफ कैप्टन, डू यू सी a new number 3? So I think short term these are the things that have to come in, and long term में अगर हम देखते हैं तो वही है कि I believe Pakistan should adopt a हॉर्सेस फॉर कोर्सेज अप्रोच, जैसी कंडीशंस हो उसके मुताबिक टीम पिक करें और जो आपको फायदा मिले. आई डोंट रिमेंबर एनीवन इन पाकिस्तान कंप्लेनिंग व्हेन स्पिन हैवी we went and won, did not lose a series under Misbah for almost 10 series or something in a row in the UAE. So why complain here? अगर ये हमारे लिए चल रहा है, जब तक आपके पास साजिद और नुमान जैसे खिलाड़ी हैं जो आके परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर अगली सीरीज में नहीं करते, अगली सीरीज में आप स्पिनिंग विकेट्स बना के हार जाते हैं, तो फिर आप फॉर्मूला चेंज कर दें. वही तो खूबसूरती है क्रिकेट की कि यू कैन डू दिस. सो आई वुड इमेजिन the third spin bowler, that extra bowler, and potentially the extra batsman. These are the big questions for Pakistan in the immediate, short, and long term. So right now अभी हम इतनी टेक्निकल चीजें फिर सोचेंगे नहीं. These were obviously, these are things we have to think about, but right now we are so happy. So Exactly. congratulations for once हम लोग winning side पे हैं. And for the South Africa series, we can only hope this win streak continues, inshallah. Or Shan Inshallah. ke under we will see another series win, away win. That is going to be a big deal. Uh, Hopefully people treat Shan better now. Exactly. Which I hope we have they seen give him some the credit. bitter things. Some एक तो सम बिटर होती है, और जितनी मुझे गालियां पड़ती हैं, मैं आई नीड टू फाइंड अ वे टू गेट थ्रू टू हिम एंड टेल हिम कि जो अगर कोई मुझे भी जो गालियां पड़ी हैं तो उसका भी कोई बता. आई फाइंड इट सो सैड टू बी ऑनेस्ट विद यू दैट हमारे से हमारी अपनी प्लेयर्स की सक्सेस नहीं एंजॉय होती, कप्तान की सक्सेस. ही इज वर्कड सो हार्ड, he has worked so very hard to keep this team together, and he stands up for his players, he defends. आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि हमने सीरीज विन के आफ्टर मैच में हमारी मीडिया से देखा बड़े ही कुछ घटिया सवाल थे, कुछ बड़े ही आप मैं कहूंगा बहुत ही गिरे हुए बिहेवियर्स थे. तो शान हैंडल्ड इट विद अ लॉट ऑफ क्लास, विद अ लॉट ऑफ ग्रेस, and he stood up for his boys. He stood up for Babar and Shaheen when they were dropped. He stood up for Abdullah and Saim as an opening partnership. I think he's led the team with a lot of heart, and he's led the team with a lot of honesty. The most incredible thing about Shan is how honest he is, and he wants Pakistan cricket to do well. And बड़ा वो एक obviously frustration होती है जब वो शोएब बशीर से आउट हुए, लगा के उस पे, बट जिस तरह आते ही उन्होंने वो सीरीज एंड की. समटाइम्स स्मॉल टारगेट्स कैन बी अ बिट ट्रिकी. एक या दो आउट, उन्होंने कहा नहीं भाई आज नहीं. Just the fact that we saw T20 Multan Sultan's version of Shan when he came out and just started sweeping and reverse sweeping. And that 23 of 6 balls, I think बहुत सारे जो हमारे दुख थे ना were washed away with that 6. So yeah, I agree with you. I hope they give him respect, treat him better, and inshallah we can go and do well in South Africa. Series win तो चले हैं, but if we can do well, I hope we respect that. I hope he takes some time and celebrates this as well. जैसे कुछ सैडेस्ट लोगों को छोड़ के हम लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं. एंड आई होप बिल्कुल साउथ बिल्कुल. अफ्रीका सीरीज इज अ गुड वन फॉर हिम एज अ कैप्टन. एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन, hopefully another win के बाद and not a heartbreak in Australia. Well, I think Australia, though, I guess हमें आदत है. But I mean, if we, I think we should just now remember that it will take some time. Obviously, बहुत सारे changes आ रहे हैं, बहुत सारे आ चुके हैं. So as long as we see, जैसे आपने कहा, if you see fight, if you see passion, if you see desire, अगर आपको वो चीजें नजर आ रही हैं तो आप हार भी रहे हो ना. The biggest issue was कि हमने जो 3 साल घर पे सीरीज नहीं जीती, हमने फाइट नहीं, other than Babar's knock against Australia in Karachi. We didn't really see Pakistan. New Zealand के खिलाफ we were holding on. England के खिलाफ we were confused. Australia के खिलाफ हमने फाइट देखी, बाबर की वो innings देखी. You need more moments like that. You need more Saud hundreds. You need more Sajid, performances. As long as you're seeing fight and an effort, because you're playing for this. If this is what you're giving everything for, आप हार भी रहे हैं तो ठीक है.
वो जो हमने देखा कि आप हार रहे हैं बट आप बांग्लादेश के खिलाफ, कि आप सेकंड इनिंग्स में हर दफा कोलैप्स कर रहे हैं, 6 मैचेस इन अ रो, हर दफा थर्ड इनिंग्स में आप मैच हारे, जो भी हो. सो नाउ व्हाट वी सॉ इन दीज गेम्स, दीज लास्ट टू विंस, कि दोनों दफा इन द थर्ड इनिंग्स वी रिवर्स दैट ट्रेंड. हमने या इंपॉर्टेंट रन्स बनाए या हमने इंपॉर्टेंट विकेट्स ली. That was the difference. So, like you said, I hope we just see fight and desire and application. That's all we can ask. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड सेलिब्रेटिंग विद अस. काफ़ी टाइम बाद हमें एक बहुत खुशी से शो करने का मौका मिला. सो थैंक यू सो मच. वी विल चैट अगेन इंशाल्लाह. Thank you so much, Ariha ji. Always a pleasure to be here with you, with Grassroots. And like you said, something to celebrate. Inshallah, more celebrations. लोग भी कहते होंगे इस मनहूस को जब देखते हैं ये रो रहा होता है, सारा वक्त कोई हार रहे होते हैं, तो भाई सीरीज जीतेंगे तो खुश होंगे. अब आप लोग भी थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लें प्लीज. Inshallah. So thank you so much for joining us, everyone. Comment, share, and tell us how did you celebrate this win. So thank you. Allah Hafiz.